guys, I'm going to enter this local Goan bar. Sweetie, 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 tera pyar chahiye. Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is going to be a very special video because I'm going to introduce you Urrak, which is a jungle juice in Goa. Urrak is a local drink of Goa that you must try. Most tourists are unaware about Urrak. In this vlog, I will tell you all about Urrak. Also, I will take you a local place where Urrak is brewed and from where you can buy it. So now we will make a peg of Urrak. So this you can see it's a clear Urrak. And we'll pour it. Pour it till half, right? Okay. And after that, this is Limca. I mean, it's a replacement of local Limca. Actually, you can use Limca also in this case. We put Limca inside. That's it. Yes. Half enough. And then we have fresh soda. Let me know the quantity, huh? That's it? Yes. Okay. And then Lime. we have to put lime. So now I'm expert in making Urrak peg. Okay. And then we have to put little of salt, little pinch of salt. This much is enough? Enough? Now the fizz will come up. And little pinch of green chili. Yeah? And taste it. Nice. Tasty, no? Very. So to kill the summer of Goa, kill the heat of Goa, you should have this drink. And this drink is available only for 2 to 3 months from February to March, April, May. March, April, May. It starts actually in February. Last end of February. End of February it starts and it will last May. just before rains. Yeah. So after rain starts, you can't have it. So we have Satish with us, who's running this local bar, Sweetie Bar. It is located in Palolem, and it is a very, prominent place. You will not face any issue while finding this place, and you can come here and have Urrak whenever you want in season time. So let's talk to Satish. And Satish, can we know your full name? Yeah, Satish Desai. सतीश देसाई. और आप इधर भी रहने वाले हैं? लोकल ही है, हम पालोलेम. ओके, पालोलेम से ही है. कब से आप ये बार चला रहे हैं? मैं कम से कम 25 साल हो गया. आप 25 साल से रन कर रहे हैं. और उससे पहले कब से है? पहले हमारा पुराना लोग चलाता था. ओके. 100 साल का पुराना बार है. ओके, 100 साल से चला रहे हैं. और खाली ये बार ही है, नॉट रेस्टोरेंट. हाँ, it's not a restaurant, it's a bar. You won't find food. तावेरे. हाँ. खड़ा होके पीने का बार. Okay, it's a standing bar. So you just come here, take shots of Urrak or any liquor of your choice, and then that's it. And then you can go home, have your food. Yeah. Right? So food you will not find here, but all variety of liquor is there. Yes. So सब कुछ है यहाँ पर. Urrak है. सब season लोग का में. बार सभी है. दारू कौन सा बनता है वो पूरा ही है. Okay. So खाली नहीं है क्या फूड. ओके, सिर्फ फूड नहीं है बट साइड में रेस्टोरेंट है यहाँ पर बहुत सारे फूड के लिए. So if you want, this place is very famous for Urrak, so you should definitely try coming here and have Urrak in authentic way, in a Goan authentic way. So cheers. Yes. So this is Kaju fruit and there are so many Kaju trees out here. So Kaju tree is not the origin of India or Goa. Kaju tree was actually brought here by Portuguese from Brazil in 1700s. So ये देखिए काजू फ्रूट है और ये अभी पका नहीं है. काजू फ्रूट अभी बड़ा हो रहा है. This is the ripe काजू. So इस काजू को तोड़ा जाता है ऐसे और इसका फ्रूट और काजू को अलग अलग किया जाता है प्लग करके.
15 15 kgs. इसके बाद ये सारे काजू फ्रूट्स को इधर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसका जूस निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्रशर है, क्रशर में इसको क्रश करके इसका जूस निकालते हैं एंड आफ्टर दैट ये जूस को पूरा टैंक्स में इकट्ठा करते हैं उधर फर्मेंट करने के लिए। तो हाँ। क्रश पहले आ होता है ना, हाँ। इसमें क्या होता है मानो इसमें पहले वो डालते हैं, हाँ फ्रूट डालते हैं, तो बाद में कुछ तो पट्टी वट्टी डालेंगे लकड़ी का, हाँ, उसको बाद फिर में उसको प्रेस करेंगे। तो प्रेस होगा, पूरा जूस आएगा। राइट। पाँव से कुचलते हैं ना, उसका वो बाद में इसका फ्रूट का लेयर रहता है, देखो फ्रूट का पीस पीस छोटा छोटा आएगा अंदर। हाँ हाँ हाँ। इसमें क्या होता है, पूरा जूस ही आता है हाँ, और right, कुछ नहीं आएगा बाद में। सो इट्स अ बेटर वे, है ना? शॉर्टकट और बेटर वे और फास्ट वे है, उसमें वो मेहनत ज्यादा लगता है। इसमें क्या है, एक अब जनी तो कोई नहीं करता ना, पाँव से पहले करते थे ना। हमारे गांव में चल रहा था, अभी बंद हो गया। हाँ तो अब कैजू नट का भी प्राइस बढ़ गया है ना। हाँ फ्रूट आउट ऑफ 100 40 to 50 पीपल्स, हाँ 40 से 50 लोग ही निकालेंगे ये। हाँ। क्योंकि कैजू नट का भी पैसा आता है, ये ऐसे ही छोड़ देगा, ये गाय वाय खाते हैं बाद में। बट इसका कैशू तो निकाल देते हैं ना। हाँ पहले निकाल दे। कूल। कैजू नट का भी प्राइस बढ़ गया, तो ये लोग ये जो ना फ्रूट बस जंगल से लेके आना पड़ता है इतना दूर से। हाँ। तो कम ही लोग लेके आते हैं, ज्यादा लोग नहीं लाते ये सब। कितने रुपए किलो लेते हैं ये लोग ये? पता कैसे लेते किलो? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो? 2 रुपीस किलो है। दिस इज 2 रुपीज किलो दिस फ्रूट। हाँ। ओह, बहुत सस्ता है यार। ये पहले रेट था, लेकिन जूस भाई प्रोसेस भी ज्यादा रहता है ना, हाँ उनको भी काम करना पड़ता है। अगर जूस निकाल के लेके आते तो पहले तो महंगा जाता था। हाँ। पता पहले कसं होता डबा रोसाचो, पहले 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया जाता था पहले। हाँ अभी क्या है, ये वो खाली लेके आते हैं, मेहनत तो ये लोग करते हैं ना बाद में जूस निकलने का। सो इस जूस को इधर इकट्ठा करके 1-2 दिन तक फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करने के बाद दे स्टार्ट बॉइलिंग इट। ये इनका वेसल होता है, कॉपर वेसल, इसमें इसको बॉईल करते हैं। सो इस जूस को गर्म करने के बाद इसके जो स्टीम बनता है उसको इकट्ठा किया जाता है। इट्स अ डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्चुअली विच दे आर फॉलोइंग, और उसको स्टीम को इधर लेके थोड़ा ठंडा करते हैं पानी के थ्रू, एंड देन द वेपर्स कम आउट एज वाटर। हियर इट गेट्स कलेक्टेड इन दिस केन। तो ये जो है ये उर्राक है, दिस इज प्योर उर्राक। So this is the process of making urrak. I hope you enjoyed watching this video. Let me tell you that Goa is more popular for its kaju and feni. However, locals have been toasting to urrak every summers. Locals prefer urrak over any other liquor brand because it is exclusively available during summertime in Goa. So if you are coming to Goa in summertime, please do try this special drink of Goa. You can get fresh urrak in most of the smaller and local bars in Goa or directly from small manufacturers. It has a very short shelf life and hence it is not bottled and sold commercially on large scale like any other liquor brand. March to May are the best month for fresh urrak. Local people here say that drinking urrak during summer months will keep your cold and fever away for the rest of the year. Also, do not forget to like this video. If you enjoyed watching, please do subscribe my channel and support me. Please share this video with your friends and your known people. See you soon. Till then, bye bye. Take care.